In the previous lecture, we have gone through 2 to 3 devices of the K-Jetronic, such as a fuel pump, okay, second is accumulator, third one is a pressure regulator. So it is a primary pressure regulator come push-up valve assembly. Now we will see the another devices of K-Jetronic system, such as a injector, or we can say uh, fuel valve, or fuel injecting nozzle. Okay, so basically there are two type of injector are present in case of the K-Jetronic system. Okay, the first injector is known as your service injector, and second is known as your starter valve. Okay, so starter valve and the service injector both are injector, but there is a constructional difference and the your working difference or the purpose difference. Okay, so but the work on both are the same, that is to allow or inject a fuel into the air stream, or start the injection into the air stream, so it can be mixed with the air in order to form the air mixture, and that will get conveyed to the conveyed to the each cylinder through their inlet manifold. Okay, so this is the purpose of your injector. Both are injector, but name is different and the purpose is different. On the basis of the name, this injector is called as a service injector, okay, which is shown on the slide, and another injector which is not right now shown, but that injector is called as a starter valve. Location wise, I point out those things, or highlighted those things on this entire diagram. Okay, so this dotted line, this the injector which is located inside this dotted box are representing a injector valve or fuel injector. Okay, or you can say service injector. You can see the fuel injector or the service injector or the injection valve, any name you can say, that are located directly to the inlet manifold, the position of each respective cylinder. So here is the four cylinder engine is present. This is the first cylinder, second cylinder, third, and the fourth. So each cylinder, each injector is located at the inlet manifold of respective cylinder. So those injector is called as the service injector or the injector valve, which is equal in number of cylinder, which is equal to number of cylinder. So जितना number of cylinder रहेंगे आपका, उतने number of आपके injector में, that is a service injector, which is individually or dedicatedly serve or that particular cylinder. Okay, so ये injector जो है वो इसी cylinder के लिए काम करेगा to for the fuel डिलीवरी के लिए. ये इंजेक्टर भी इसी सिलेंडर के फ्यूल डिलीवरी के लिए काम करने वाला है, और ये इंजेक्टर इसी के, ये भी इसी के. सो जितना नंबर ऑफ सिलेंडर रहेंगे उतने नंबर ऑफ आपका सर्विस इंजेक्टर बोल सकते हैं, या उसको फ्यूल इंजेक्टर वॉल्व बोल सकते हैं, वो रहेंगे. नाउ अनदर टाइप ऑफ इंजेक्टर दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टर वॉल्व. देखिए यहाँ स्टार्टर वॉल्व लिखा है, दिस इज द स्टार्टर वॉल्व. वी विल सी दिस थिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, after two devices. So just for the intro, I have comparing on those two kind of injector on this slide. The starter valve has also maybe there or may not be there. Means in case of the K-Jetronic system, it is there. But if we talk about a D-Jetronic system or another other kind of L-Jetronic system, then the service injector only plays the role of the starter valve. But the K-Jetronic is very initial development of the amplifier system. In those days, they are using a separate injector called the cold starting problem to overcome the cold starting problem. But nowadays, no any separate injector is used to overcome the cold starting problem. They are supposed to give that cold starting issue solution, or they come up with the cold starting issue solution by integrating that purpose with the service injector only. Okay, so एक part कमी झाला new amplifier system मध्ये. But the old amplifier system है, like जे आपण बघतो K-Jetronic system, in those system they have a separate injector for to overcome the cold starting problem, and another injector which is located individually to at each inlet manifold position of the cylinder to serve a continuous or required fuel amount to run a engine. Okay, so these two kind of engine, and location wise if you compare, the starter valve of the cold starting injector is located at the inlet not manifold area. Okay, or this service injector is located at the port area.
Service injector is located at the inlet port, and the starter wall or the cold starting injector are located at the inlet manifold area. So it is common for all cylinders, not like that service injector. The service injector is equal to the number of cylinders. जितने number of cylinder रहेंगे उतने service injector रहेंगे, serve a individual service to that particular cylinder. So ऐसे service injector के बारे में रहता है. In case of the starter, is your starter wall is not like that. Okay, वो starter जो starter इंजेक्टर है वो एक अपनी मेन जंक्शन जो बोलते हैं इंलेट मैनिफोल्ड एट दैट लोकेशन एक ही रहेगा, विच इज सर्विंग to service to all cylinder, okay, during the cold starting problem. So this is the purpose. Now we will see what is the construction of the, or what is the location. We have already seen this thing, but let's go point by point. So it is the first point. It is situated at the entrance of each cylinder at the port section. जैसे कि बोला हमने कि ये आपका इंजन है which have a four cylinder. This is the first, second, third and the fourth. Okay, this is the exhaust port. So this is exhaust port of this cylinder, this is exhaust port, this is exhaust port, and this is exhaust port. Okay, so exhaust port are come together in order to form an exhaust manifold. Similarly, inlet port come together in order to form an inlet manifold. Okay, so at inlet port section of each cylinder, injector service injector is located, or you can say injector wall is located, which dedicated to that cylinder only. Okay, so its location is at the port section. So you can say it is a port fuel injection system, which we can call it PFI also. Okay, the wall are insulated in holder to prevent the fuel vapor bubbles forming in the fuel line due to that the heat of the engine, which will make the starting difficult. So ये जो इंजेक्टर है it is insulated properly, because due to the heat regulation, due to the conduction of the heat, whatever the pressure present below this wall, this is a wall. Okay, यहाँ ये wall अंदर सीट पे properly रेस्ट है, in this position ये wall सीट से लिफ्ट हुआ है और इंजेक्शन fuel injection start हुआ है. So if these things are start to absorb or heat inside the body, and it convert to the fuel present behind this wall. The wall or the fuel which is present behind this wall start to vaporize, and due to vaporization it converted into gas form. And as we know, gas is compressible, which may responsible to drop of pressure in a line, injection pressure in a line. So that may be that may create a difficulty for the starting. Okay, so hot starting, there is a problem like hot starting. Okay, so that those problem may arise due to the improper insulation of the injector body. So those things are properly insulated. This body is properly insulated in order to restrict the conduction of the heat towards the fuel line, or towards the fuel present inside the injector. Okay, after that the injector do not meter the fuel. Its main function is to open certain injection line pressure about 3.5 bar. So जो भी ये जो इंजेक्शन K-Jetronic सिस्टम हम देख रहे हैं, तो K-Jetronic इंजेक्शन सिस्टम का एम ही है कि कंटिन्यूस इंजेक्शन करना है. कंटिन्यूस मीन्स व्हाट? वंस इंजन इज स्टार्ट टिल द एंड, इंजन हम जब तक चाबी ऑफ नहीं करते इंजन का, टिल दैट पॉइंट वी आर मेकिंग अ कंटिन्यूस इंजेक्शन. मतलब एक बार नल खोल दिया फ्यूल का, दैट इज इंजेक्टर ने एक बार नल खोल दिया, ऐसे फ्यूल आने को स्टार्ट हो गया, फिर गाड़ी जब तक हम ऑफ नहीं करते तब तक फ्यूल इंजेक्शन विल कंटिन्यू. ओके, सो now we will ask me how the metering of fuel will regulate control of how metering is take place, because इंजन का लोड तो वेरिएबल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन पोजीशन, डिमांड ऑफ फ्यूल वेरिएबल रहेगा. सो हाउ वी डील विद दैट? सो हियर जो भी मीटरिंग करना है उसके लिए मीटरिंग डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक करके है, वो उसका काम करता है. इन केस ऑफ द कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम हम मीटरिंग दो तरीके से कर सकते हैं. एक फर्स्ट मेथड है जो ये ओरिफाइस है इंजेक्टर का, इस ओरिफाइस का डायमीटर जो है उसका ओपनिंग रेगुलेट करो, या सेकेंड थिंग इस जो प्रेशर है जिस प्रेशर से हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं वो प्रेशर को रेगुलेट करो. ऑन दैट बेसिस वी कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्यूल कन्वेट टू द इंजन. ओके, ये पॉइंट नोटिस करो, ये जो पॉइंट बोला मैंने कि इन केस ऑफ द कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम, if you want to meter a fuel quantity, there is only two things. One is the regulate the orifice diameter through which fuel injection is there, okay, through which fuel injection will take place. ये भी orifice हो सकता है, ये जो diameter है इसका जो opening है इस wall का,
इसको भी हम रेगुलेट करके कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो लाइन में प्रेशर रहेगा फ्यूल इंजेक्शन का, अगर उसको भी रेगुलेट किया तो भी हम फ्यूल रेगुलेशन और फ्यूल मीटरिंग कर सकते हैं। फ्यूल मीटरिंग का मीनिंग होता है कि इंजन जितना मांग रहा है उतना ही देना, मीटर करके देना, मेजर करके देना। ओके, नहीं तो इंजन कम मांग रहा है, यू आर सपोज टू send a huge quantity that will lead incomplete combustion or that will lead a poor mileage of your vehicle. Okay, so metering is very important here. In case of the carburetor, metering will take place with the help of the venturi section and the main jet section, but that was an automatic thing. But here we are, so here we have a moving part. In case of the carburetor, there is no such moving part will be there. Everything is take place on the basis of your throttle valve position, because on that basis your vacuum at the manifold section, sorry, at the throat section will vary, and with that proportion air fuel quantity was developed there and it is conveyed to the cylinder. But here is not like that. क्या हो रहा है इधर with respect to the position of this wall, up and left, up and down, your orifice will regulate, orifice opening will regulate. But what I quoted here कि the injector do not meter the frame, मतलब ये orifice भी जो है इंजेक्टर का, यहाँ का ओरिफाइस ये भी नहीं मीटर करेगा, तो फिर कोई ना कोई ओरिफाइस हमें लगेगा कि जो फ्यूल की क्वांटिटी मीटर करेंगे। तो वो ओरिफाइस जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक की है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, ये इसकी ओरिफाइस रेगुलेट होती है जो फ्यूल की क्वांटिटी मीटर करती है। तो वो हम बाद में देखेंगे। पर ये जो इंजेक्टर का ओरिफाइस है यहाँ ओपनिंग, जैसे ये वॉल नीचे पुश होने के बाद ये ओपनिंग आएगा, स्मॉल ओपनिंग जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होने को स्टार्ट होगा, वो ओपनिंग कांस्टेंट है, एक तो पूरा ऑन नहीं तो पूरा ऑफ। ओके, जैसे घर में कुछ टैप रहते हैं वो फुल ऑन फुल ऑफ जैसे रहते हैं, वैसे कुछ नल होते हैं जिसको घुमाना पड़ता है। सो जितना परसेंट हम ओपन करें, 30% ओपन करते टैप को 60% ओपन करते, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो भी इंक्रीजेस। और कुछ टैप ऐसे रहते हैं कि सिर्फ ऑन एंड ऑफ पोजिशन रहता है। सो दिस इंजेक्टर इज ओनली ऑन एंड ऑफ टाइप, फुल ओपन होगा या फुल क्लोज होगा। सो यहाँ ओरिफाइस की पोजिशन यहाँ की दो ही रहेंगे, एक तो फुल ऑफ और फुल ऑन। सो इन दैट, ड्यू टू दैट, दिस इंजेक्टर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मीटर ऑफ फ्यूल क्वांटिटी। सो फ्यूल मीटरिंग का क्वांटिटी, फ्यूल मीटरिंग करने का जो टास्क है वो हमने किसी दूसरे डिवाइस को दे के रखा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक। सो इसलिए यहाँ मैंने बोला है कि द इंजेक्टर टू नॉट मीटर द फ्यूल, इट्स अ मेन फंक्शन इज टू ओपन एट अ सर्टेन इंजेक्शन लाइन प्रेशर। मतलब इस बॉडी में एक पैसेज है जहाँ हॉलो दिख रहा है, इस पैसेज में ऑल योर प्रेशराइज फ्यूल इज प्रेजेंट। ओके, देखो यहाँ ये जो पैसेज है हॉलो, यहाँ आपका फ्यूल प्रेजेंट रहेगा जो अप टू 3.3 बार या उससे कम, दो बार से लेकर 3.3 बार तक रहेगा। ओके, और जब प्रेशर 3.3 बार के बियॉन्ड जाने को स्टार्ट होगा, दैट टाइम दिस वॉल गेट पुश्ड डाउनवर्ड। ओके, दिस wall get pushed downward and it leaves the seat. Okay, once it leaves the seat, what will happen is opening get available to fail to enter into the inlet manifold. जैसे opening available हो जाता है inlet manifold को, fuel को, that pressurized fuel को, वो start हो जाते हैं inlet manifold में enter होने के लिए। So this is the thing, how that pressure applied 3.3 bar and how the seat will deflect from this, how the wall will deflect from the their wall seat. Okay, and fuel injection will start. So इस तरह से ये सिर्फ दो ही ओपनिंग रहेगा, दो ही पोजीशन रहेगा इस वॉल का, एक तो फुल क्लोज और एक तो फुल ओपन। तो दिस इज द पोजीशन। ये है आपका बॉडी जो हैचिंग किया है, दैट इज योर बॉडी ऑफ इंजेक्टर और स्टार्टर वॉल, सॉरी नॉट स्टार्टर वॉल, इंजेक्टर वॉल। ओके, दिस इज अ स्ट्रेनर जो डोम टाइप दिख रहा है आपको, दिस इज अ स्ट्रेनर विच यूज टू फिल्टर द debris or the foreign particle which is present in the fuel. This is your wall. Okay, this wall is spring loaded, so due to that spring pressure, it resists to leave their seat. Okay, but when pressure behind the seat goes beyond 3.3 bar, then that 3.3 bar is responsible to deflect the spring and allow to fuel enter to the inlet manifold. Okay, so this is the construction. Now once the needle wall open, it oscillates at high frequency. Okay, ये जो इंजेक्टर वॉल सीट ओपन हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद ड्यू टू द कंबशन प्रेशर, एवरीथिंग ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो ऑफ दिस वॉल, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिलो एंड अबव ऑफ दिस वॉल, इसके वॉल के अबव कौन सा प्रेशर रहेगा, फ्यूल प्रेशर,
and below the wall कौन सा प्रेशर रहेगा, वैक्यूम प्रेशर, because this thing is located in inlet manifold. So inlet manifold में normally vacuum or the pressure near to atmosphere रहेगा. So due to this pressure difference, okay, it continuously oscillate, okay, and the discharge fuel becomes highly automized. Automized means what is the meaning of automation? शायद आपने कार्बोरेटर जब पढ़ा होगा that time we have gone through that thing. Automation means breaking of the bulk molecule or bulk quantity of fuel into fine molecule. जैसे आप बार बार शॉप में जो स्प्रिंकलर रहता है, that sprinkler automize the water droplet and it just create a fog of water, okay, जो सलून में बार बार स्प्रिंकलिंग करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द ऑटोमाइजेशन. जो ड्रिबलिंग का एक्शन हो रहा है दिस सिप वॉल का, और ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिलो एंड above of this wall, it creates a automized thing, okay. So becomes highly automated due to middle border dynamic motion. So this helps to helps to create a high surface to volume ratio of that airplane molecule. So maximum surface area is available to evaporate, or due to this thing high rate of automation, vaporization will take a quicker, okay. So that is our requirement to make a combustible air fuel vapor mixture, okay. To have a complete combustion, our main aim is to make a combustible air fuel vapor mixture, okay. Vapor fuel mixture I am saying, so fuel should be vaporized. So to have a good vaporization or quick vaporization, our automation is very important, okay. So this is the thing, at the 1500 cycle per second कितने हाई स्पीड से या जो वॉल रहेगा, इट विल स्टार्ट ड्रिबलिंग और वाइब्रेटिंग. The spring behind the wall also enter, no revert to take place. Just a minute. Okay, so at the last is the spring behind the wall ensure to dribble take place. So this is the injector or the starter valve which is used to control, or which is used to deliver the fuel into the inlet manifold. Okay, काही डाऊट आहे याच्याबद्दल विचारायचं?